डेल्टा डेवलपमेंट में जाएंगे तो उन लोगों के लिए अपने आप को सेट करना इजी हो जाएगा। तो वर्क बिहेवियर में कुछ पॉइंट्स है, उससे पहले मैं पॉजिटिव वर्क बिहेवियर और नेगेटिव वर्क बिहेवियर बोल लेता हूँ। पॉजिटिव वर्क बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव वर्क बिहेवियर मतलब बच्चों के अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है या उसका अंदर जो भी वो काम कर रहा है, अगर वो काम सही तरीके से कर पाए तो बाकी सारे लोग उसको रिकॉग्निशन दे, उसको शाबाशी दे, तो उसके अंदर बहुत अच्छा से वो काम करने का इच्छा आता है और अच्छे से काम भी कर लेता है। नेगेटिव वर्क बिहेवियर क्या होगा? मान लीजिए कोई बच्चे बहुत अच्छे से काम करता है, वो अपने स्किल में पूरा फिट है, वो अच्छे से अपने स्किल से काम कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो बहुत ज्यादा बातें करता है या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या दूसरों के काम में डिस्टरबेंस लाता है, तो दैट कम्स अंडर नेगेटिव वर्क बिहेवियर। तो हम लोगों को बच्चे को सिखाना है कि आप लोग अपने अंदर पॉजिटिव वर्क बिहेवियर जो है उसको डेवलप करो। जो उन लोगों के अंदर नेगेटिव वर्क बिहेवियर है उनको धीरे धीरे हम लोग एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, हमारा ड्यूटी है कि जो उनके अंदर नेगेटिव वर्क बिहेवियर है उसको एलिमिनेट करें या दूर करें। तो कुछ पॉइंट्स है, अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, देखिए कुछ ये सारे पॉइंट्स जो है उन लोगों के अंदर डेवलप करना है। पंक्चुअलिटी मतलब कहीं पर भी काम पे जाए, चाहे वर्क स्टेशन है या ओपन एम्प्लॉयमेंट, सेल्टर एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के अंदर पंक्चुअलिटी डेवलप करना मतलब उसको काम पे आना और समय पर आना, दोपहर का खाना टाइम पे खाना, फिर खाना खत्म होने के बाद फिर से काम पे ज्वाइन होना। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी हम लोग बहुत बार यूज करते थे। पंक्चुअल होना, रेगुलर होना। रेगुलर होना मान लीजिए रेगुलरिटी का मतलब मंडे टू फ्राइडे उन लोगों को डेली आना, दैट इज कम्स अंडर रेगुलरिटी। अभी पंक्चुअलिटी क्या है? पंक्चुअलिटी मतलब मान लीजिए किसी बच्चे को आना है मतलब एक टाइम फिक्स रहता है ना, टाइम फ्रेम रहता है ना, बिफोर 9 o'clock आना, टिल 5:30 तक रहना। ऐसा जो टाइम फ्रेम है उन लोगों को टाइम फ्रेम में ही आना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिन 9 o'clock आए, कोई दिन 10 o'clock आए, कोई दिन 10:30 को आए, कोई दिन 9:45 को, ऐसा नहीं। डेली जो टाइम है सही टाइम पे आना और डेली आना, दैट इज कम्स अंडर पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। तो ये डेवलप करना, ये हम लोग अगर छोटे से उन लोगों के अंदर डेवलप करें तो ग्रेजुअली वो उन लोगों के अंदर बैठ जाएगा कि चलो मेरे को डेली जाना है, रेडी होना है, इसी टाइम पे घर से निकलना है और अपना काम करना है टिल दैट टाइम। नेक्स्ट है अटेंडेंस। जहां पर भी बच्चा काम करता है, जैसे हमारे यहाँ पर डेल में बच्चे जो आते हैं, हर जगह का आना उन लोगों को मैंडेटरी है। उन लोगों के अंदर ये डेवलप करना है, कहीं पर भी आप जाओ, आप वहां पर एब्सेंट नहीं होना, आपको आना है, मतलब डेली आना है। डेली आए तो आप लोगों के अंदर जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो डेवलप होता है। अगर अगर आपको छुट्टी लेना है तो आपका जो इमीडिएट बॉस है, आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है या जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, इमीडिएट जो सारे उनके पास से अनुमति लेकर ही घर जाना है। अगर आपको घर जाना है तो क्यों आप जा रहे हो, ये जो आपके बॉस है या जो सुपरवाइजर है उनको एक कारण बता के जाना। जैसे कि मान लीजिए नहीं आ पाए काम पे, क्यों नहीं आ पाए, क्या बस स्ट्राइक था या घर पे कोई कोई काम आ पड़ा सडनली, या तो घर में किसी का तबीयत खराब है या खुद का तबीयत खराब है, जो भी है उसको अपने जो इमीडिएट बॉस है या जो एम्प्लॉयर है उसको अंदर मतलब एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना, ताकि जो रिलायबिलिटी है वो बजाय रहे। और सिग्नेचर इन अटेंडेंस रजिस्टर, जो पर्सन सोसाइटी है, हर जगह का डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रूल और डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या होता है कि हर जगह का अटेंडेंस का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर बायोमेट्रिक है, कहीं पर आई ब्लिंक होता है जो रेटिना से जो अटेंडेंस होता है, कहीं पर थंब इम्प्रेशन होता है, कहीं पर सिग्नेचर अटेंडेंस होता है। तो आप लोग जहां पर भी काम करते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये 2-3 टाइप का अटेंडेंस ध्यान में रखना है। तो बच्चे को बिफोर आप लोग कहीं पर भी उन लोगों के ओपन एम्प्लॉयमेंट में सोचे हो तो उससे पहले वहां कर जाकर विजिट करके कौन सा टाइप का वहां पर अटेंडेंस टाइप है वो देख के उसी हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना, ताकि जब वो ओपन एम्प्लॉयमेंट में जाए तो जो लर्निंग पीरियड में जो लर्निंग सीखे वो वहां जाके काम को जनरलाइज कर पाए, मतलब अपना जो लर्निंग है अच्छे से ट्रांसफर कर पाए। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। अपने जो सुपरवाइजर है उसको या जो एम्प्लॉयर है उसको विश करना, डेली आके गुड मॉर्निंग बोलना सुपरवाइजर, और जो अपने एम्प्लॉयर है उसको रेस्पेक्ट करना,
जैसे हम अपने सर लोगों को करते हैं, अपना जो कोवर्कर है उन लोगों को भी ग्रीट करना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसा। काम में आने के बाद कोशिश करना कि दूसरों को डिस्टर्ब ना करके अपना काम को कंटिन्यू रखे। दूसरों को जो काम करते करते, मैं बोला ना नेगेटिव वर्क बिहेवियर के टाइम जो दूसरों के अनड्यू अटेंशन, अनड्यू बिना वजह दूसरों का अटेंशन नहीं लेना, अनड्यू अटेंशन सीख नहीं करना। अगर ये करे तो वो काम में डिस्टर्बेंस होता है, तो आपके पास से एम्प्लॉयर जो जो आपके पास से प्रोडक्शन मांगता है या आपके पास से जो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है, तो वो बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा। तब फ्यूचर में उसका जो जॉब को रिटेन कर पाना वो मुश्किल हो सकता है। जहां पर काम कर रहा है एपीडब्ल्यूआईडीज, एडल्ट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन, उन लोगों को क्या करना है, जो अपने जो कोवर्कर्स है उन लोगों के साथ मिलजुल के काम करना। अगर काम करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी प्रॉब्लम फेस हुए, तो आपने जो कोवर्कर्स है उन लोगों के साथ शेयर करना है, या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपने जो कोवर्कर्स है उन लोगों के साथ शेयर करना। ऐसे उन लोगों को अंदर जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा डेवलप करना। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों के अंदर जो वर्क बिहेवियर में। स्पेशली 2019 में बोल सकते ठीक है, चलो हाइजीन हम लोग तो नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करते उसी को कंटिन्यू करता, लेकिन 2020 मार्च ऑनवर्ड्स क्या हो गया, हाइजीन के ऊपर अभी आप सब लोग, क्योंकि कोरोना के बाद अभी सभी लोग ऑलमोस्ट बोलने का जरूरत नहीं, सभी का हाइजीन क्वालिटी पहले से 2020 से बिफोर और 2020 मार्च के बाद सभी लोगों का जो हाइजीन है, हाइजीन लेवल को थोड़ा बढ़ गया। लेकिन हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, वो उन लोगों को ये भी जो भी स्किल्स है उन लोगों को सिखाना पड़ता है। क्या हाइजीन है, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, क्यों जरूरत है हाइजीन का, अगर हाइजीन ना मेंटेन करने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वन बाय वन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जे वर्क प्लेस में पहुंचकर जो आपका जो वर्क प्लेस है उसको क्लीन रखना है। दोपहर का खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद अपना जो हाथ और प्लेट्स है उसको साफ करना है। आप जो जहाँ पर काम कर रहे हो वो वर्किंग एरिया को नीटली रखना है। आप जो काम पर जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस में, हम लोग जैसे प्रॉपर ड्रेस में आते, नीटली आते, अपना कंघी करके सारे मतलब प्रॉपर जो ऑफिस ड्रेस में वहाँ आना है। ग्रूम्स अपना जो शेविंग करना, डेली कंघी करना, बाल को सही तरीके से कॉम्बिंग करके अपने काम में, लेडीज हो तो ग्रूम करके आना है। जहाँ पर काम करते हो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि कौन किस तरीके का काम करते हो, उस हिसाब से अगर आपको वहाँ पर चप्पल या शूज जो है रिमूव करना है या चप्पल पहन के काम करना है, वो भी उन लोगों को सिखाना है। डिपेंड्स ऑन क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये पर्टिकुलर ये पॉइंट डिपेंड करता है। कहीं पर होता है कि जाकर ड्रेस चेंज करना है, अलग तरीके का शू पहनना है, तो वो भी उन लोगों को सिखाना है, ये बोल देना है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जहाँ पर आप काम करने जाते हो घर से जो ड्रेस पहन के गए हो वो ड्रेस खोलो, फिर जो वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो ड्रेस है वो ड्रेस पहनो, फिर काम करो। काम खत्म होने के बाद फिर से वो वाला ड्रेस घर जाने से पहले पहनो, पहन लो और फिर घर जाओ। घर जाने से पहले आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ का जो जो आपका जो वर्किंग प्लेस है पर्टिकुलर आपके लिए जो रिजर्व है वो वर्किंग प्लेस को क्लीन रखना है। जो भी मतलब डार्टी मटेरियल हो, जो भी रद्दी का टुकड़ा है वो डस्टबिन में फेंक के जाना है। वर्क स्टेडीनेस, कार्य वर्क स्टेडीनेस, आप जहां पर काम करते हो वहां पर जाकर अपना जो वर्क प्लेस है वर्क प्लेस को सेटिंग करना है। कौन सा मटेरियल पर्टिकुलर आज जो मैं काम करने वाला हूं वो काम के लिए कौन सा मटेरियल मेरे को जरूरत पड़ता है उसको अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लेना। फिर अपना जो काम है काम के ऊपर पूरा फोकस डाल के काम करना। जो हमारा जो असाइंड टाइम है, जो एक टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के अंदर अपना काम को कंप्लीट करना। जो एक्चुअली जो एम्प्लॉयर जो हमारे जो बच्चों से एक्सपेक्ट करना है सेम टू सेम वही हम लोग गुण बच्चों के अंदर कॉन्वे करेंगे, ताकि वो बाहर जाके अपना जो ओपन एम्प्लॉयमेंट है जो भी है वहां जाकर अपने आप को अच्छे से सेट कर ले। अगर कोई काम आपकी तरफ नए काम आए तो बिना हिचकिचाहट, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन काम को एक्सेप्ट करना है। फिर अगर आपके एम्प्लॉयर बोले, मान लीजिए सपोज एनी डे कि आपको ये काम थोड़ा ज़्यादा करना है, तो कोई एंग्री या कुछ भी शो नहीं करना, आराम से उसको काम को एक्सेप्ट करना और काम करते जाना। क्योंकि ये अगर करेगा तो तभी बच्चों का काम जो जॉब है वो रिटेन कर पाएगा।
आप जहाँ पर काम करते हो, जहाँ पर जो कुछ रॉ मटेरियल्स है, वह जो भी चीज़ है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, जो ऑन द वे प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स है, उसको सही तरीके से जहाँ पर प्रॉपरली स्टैक करना है, सजा कर रखना है, वहीं पर रख रखने के लिए उन लोगों को सिखाना है। एक सेकंड। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए। जो एम्प्लॉयर या जो भी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर अगर ट्रेनिंग पीरियड में है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है या जो इमीडिएट सुपरवाइजर है या जो बाहर काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर का जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जो आपके तरफ ऑर्डर आए, वो ऑर्डर को आपको कैरी करना, मतलब उसी हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपको काम की जरूरत पड़े तो काम को कंटिन्यू करना या मेंटेन, अगर आपके तरफ जो भी काम है, काम को मेंटेन करना है, काम को लेना है, काम को कंटिन्यू करना है। अगर काम करते वक्त आपके पास कोई भी मुश्किल आ रहा है तो आपके जो कॉलीग्स है या जो कोवर्कर्स है उनसे, या जो इमीडिएट बॉस है उनसे हेल्प मांगो। सर, मेरे को इस जगह पे आके काम को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मेरे को हेल्प करो, मेरे को क्लू दो तो मैं ही अपना काम को खत्म कर पाऊंगा। मान लीजिए कोई दूसरा काम कर रहा है, आपको वो काम आता है, तो जरूर आप हेल्प करो। एक गुण भी बच्चे के अंदर डेवलप करना है। जहां पर बच्चा काम कर रहा है वहां पर अगर कुछ भी मैसेज आए तो मैसेज को अपने अंदर रखना। फिर जो प्रॉपर पर्सन है, स्पेशली एम्प्लॉयर या जो आपकी इमीडिएट बॉस है, उनको वो मैसेज कॉन्वे करना है या सही तरीके से पास कर देना है। सोशल मैनर्स बच्चों के अंदर या पर्सन्स के अंदर डेवलप क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत ही, मतलब ये एक सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। ये अगर डेवलप होगा, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, उन लोगों को स्किल्स पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है, जो वर्किंग स्किल है, वो उनके अंदर डेवलप हो गया। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है, कैसे लोगों के सामने पास आना, कैसे बात करना, कैसे लेडीज से बात करना, या जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये उन लोगों के अंदर डेवलप करना। ये तभी डेवलप होगा जब वो आप एज एज इंस्ट्रक्टर आप अपने जो उनके माता पिता को या पेरेंट्स को बोलोगे कि ये इसको सोशल फंक्शन में लेके जाओ, या कहीं पर भी जहाँ पर सोशल गैदरिंग्स होता है, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी हो, चाहे कहीं पर भी जहाँ पर सोशल गैदरिंग हो, यहाँ पर अगर बच्चा जाएगा तो उनके अंदर जो सोशल स्किल है वो डेवलप होगा। यहाँ पर यही सारे पॉइंट्स लिखा है, जो बिहेव्स प्रॉपरली, अवॉइड, बिना वजह दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना या झगड़ों से बचकर रहना, बिहेव्स प्रॉपरली विथ अपोजिट सेक्स, अवॉइड, मतलब डू नॉट गिव फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट, दूसरों के बारे में हमेशा शिकायत नहीं करना। अगर सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, टू डेवलप सोशल स्किल। नियमों का अनुशासन, कॉन्फॉर्मिटी ऑफ टू रूल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल्स रहता है, अपना रेगुलेशन रहता है। तो क्या करना है बच्चों को, ये अंदर डेवलप करना है, जो पर्टिकुलर जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ उन लोगों का अपना नियम होता है। तो वो रूल्स को, रेगुलेशंस को उन लोगों को फॉलो करना है, उसी हिसाब से उनको चलना है। ऐसा नहीं कि मेरा मर्जी है, मैं अपना हिसाब से चलूँ। नो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम होता है उनको मेंटेन करना है। अगर काम में आए, कुछ भी जरूरत पड़े सडनली घर जाने के लिए या छुट्टी लेना है, तो अपने जो बॉस से बोलना है क्यों छुट्टी लेना है, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है छुट्टी लेना है। आप छुट्टी लेने से पहले आपका जो अधूरा काम है या जो जो लेफ्ट काम है, जो आपको असाइन किया गया था, जो काम आप खत्म नहीं कर पाए, वो जो आपका जो कॉलीग है या जो आपके साइड में जो कोवर्कर्स है, उन लोगों के पास अपना जो काम है उनको सौंप के, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आज मैं खत्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया, मैं घर जा रहा हूँ, तो आप ये काम प्लीज खत्म करना। ये सारे समझाने के बाद ही आप वहां से जा सकते हो। जैसे हम लोग करते हैं, सेम टू सेम वर्क बिहेवियर उन लोगों के अंदर डेवलप करना है। वर्क प्लेस में
कुछ भी अगर नुकसान पहुंचे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, कुछ भी अगर लॉस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से जो भी है, चाहे डैमेज करे कुछ भी करे, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। कोशिश करना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मटेरियल्स है या जो एसेट्स है उसको क्षति ना करे या नुकसान ना करे। आपको जो जो भी आपके तरफ जो ऑर्डर आता है, जो इंस्ट्रक्शन आता है, वो बिना पूछे फॉलो करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है और मेंटेन करना है। मोटिवेशन भावनात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल सॉरी, इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में क्या आता है, मान लीजिए बच्चों को कोई पर जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर जो इमीडिएट सुपरवाइजर क्या करते हैं, हमारे बच्चे कहीं पर कुछ काम, उन लोगों को रिपीटेडली काम अगर दिया जाए तो उन लोग आराम से कर लेते हैं, नहीं पर कुछ काम अगर कुछ नया ऑर्डर कोई दिन करे तो वो ठीक तरह से मे भी नहीं कर पाएगा, तो जो इमीडिएट बॉस है, इमीडिएट बॉस या जो सुपरवाइजर होता है, इधर ये हमारे पास भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कुछ हुआ था कि जो टॉलरेंस लेवल हमारे बच्चों का वो थोड़ा कम रहता है, तो स्कोल्डिंग करे तो वो कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वो शो कर देता है। तो हम लोगों को सिखाना है कि उन लोगों के अंदर जो एंगर है, एंग्जाइटी है, एग्रेशन है, वो शो नहीं करना है। अ, अगर दूसरों के अंदर दूसरा नहीं आए तो आपके अंदर जो जेलसी भाव है वो नहीं दिखाना है। जब अपने टर्न के लिए जरूर वेट करना है। जब कुछ काम आपकी तरफ आए, ऐसा नहीं कि मेरे को आता है, जो नहीं, जो आप हर किधर भी जाओ, आप अपने टर्न के लिए वेट करो। जब आपके तरफ काम आए, जब आपको सिखाया जाए, जब आपको बोला जाए, तभी ये आप मेंटेन करो। मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स बच्चों के अंदर सिखाना है। क्या सिखाना है कि अगर आपको अगर नए काम सीखने का मौका मिले तो आप जरूर इंटरेस्ट दिखाना, इंटरेस्ट शो करना कि हाँ मेरे को कुछ नया सीखेंगे तो तभी मैं ये कंपनी में या जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें रिटर्न कर पाऊंगा और कुछ नया स्किल सीख पाऊंगा, तभी मेरे मेरे अंदर भी कुछ ग्रो होगा। अगर जरूरत पड़े नया काम सीखते वक्त या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर पूछिए, मेरे को ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को थोड़ा हेल्प करो ताकि मैं ये नया काम जो है मैं कर सकता हूँ। अगर वर्क प्लेस में ऐसा अपॉर्चुनिटी आए कि नया आपको कुछ खुद से इनिशिएट करना है तो ज़रूर अपने आप से वॉलंटरीली आगे आना है कि चलो मैं करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको काम करते वक्त प्रेस किया जाए, हाँ आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, वेरी गुड, तो नेक्स्ट टाइम क्या करना, आप और अच्छे से काम करना, तभी और आपको सभी लोग प्रेस करेगा। जहाँ पर काम करते हैं जनरली नॉर्मल पीपल के साथ जो हमारे बच्चे काम करते हैं, थोड़ा हम लोगों का बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, वो जो प्रोडक्शन जो एम्प्लॉय सोच के रखते हैं वो हमारे बच्चे कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग को वो अंदर सिखाना नहीं, आप उन लोग से कम नहीं हो। आप जो जो ग्रुप का जो लेवल है, ग्रुप का लेवल से ही आप अपना स्टैंडर्ड मैच करो, कोशिश करो कि सेम लेवल में बाकी 7, मान ले ग्रुप में 8 जन हो आपको मिलाकर, बाकी 7 जन जैसे काम करते हैं आप सेम टू सेम उसी लेवल को मेंटेन करने का कोशिश करो, तभी ग्रुप का जो स्टैंडर्ड बजा रहेगा और आपका भी सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं भी एक ग्रुप का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता हूँ और आई एम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सेफ्टी, दिस इज द मतलब एटमोस्ट बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के, क्योंकि हमारे बच्चे जो होता है स्पेशली कुछ प्रोडक्शन वाला यूनिट में बहुत सारे रहता है जिसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो उन लोगों को ये सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देना है, क्योंकि सेफ्टी के बारे में अगर जानकारी नहीं देंगे तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहता है। आप जहाँ पर बच्चा काम करने जा रहा है वहाँ जाने से पहले हम लोग को खुद जाना क्या वहाँ पर क्या टूल्स है, किस तरीके का टूल्स है, वहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन है कि नहीं है, अगर सेफ्टी प्रिकॉशन कम है तो एम्प्लॉयर से बात करना, कुछ जो सेफ्टी एडवाइस एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हम लोग अगर दे सके तो वो देना है, उन लोगों को बोलना है। फिर अपने बच्चों को पर्टिकुलर जो मशीन या जो स्किल्स हम लोगों ने सिखाया है वहाँ पर जाके जिस मशीन के साथ वो काम करेगा वहाँ पर जाके कैसे उसको इस्तेमाल करता है विद सेफ्टी, वो हम लोगों को उन लोगों को सिखाना है। अगर अपने मशीन को छोड़कर अदर्स और भी मशीन है, अगर उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको टच भी नहीं करना। कोई भी मशीन है जिनमें नॉलेज नहीं है,
अपने अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ऐसे ऐसे के बारे में हम लोग को अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है तो बेटर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मशीनरी। तो ये सारे हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करना है। तो इतना सारा ही जो पॉइंट्स है बच्चों के अंदर डेवलप करना है, ताकि वो बाहर जाके जॉब को मेंटेन कर पाए, चाहे ओपन एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सेल्टर्ड हो, चाहे सेल्फ हो। अ, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। इतने सारे पॉइंट्स के बारे में मैं बोला हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी वर्क बिहेवियर के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ कॉन्फ्यूज मतलब कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, या तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो। थैंक यू हमारे चंद्रा जी। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, किसी को कुछ डाउट है, या आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि वर्क बिहेवियर आप लोग जहाँ पर काम करते हो, आप लोग जैसे कैसे बच्चे को सिखाते हो, क्या मतलब कैसे डेवलप किए, ऐसा भी कुछ आप लोग शेयर कर सकते हो। ओके, नो क्वेश्चंस देन। थैंक यू, थैंक यू पार्टिसिपेंट। आप लोग इतना पेशेंस के साथ सुना है मेरा बात। थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट सेशन के लिए मैडम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, तब तक के लिए लाइन में रहिए। ओके।
आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट जो सर है वो आने वाले हैं क्लास के लिए, थोड़ा 5 मिनट्स, कुछ 5 to 7 मिनट्स वेट करना है, ठीक है, वेट करना है आप लोगों को। ओके सर। तब तक आप लोग कुछ भी मतलब वर्क बिहेवियर के बारे में, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर कुछ भी जो है बच्चों के अंदर वर्क बिहेवियर डेवलप करिए, यहाँ पर जो भी है आप लोगों का एक्सपीरियंस वर्क बिहेवियर के बारे में शेयर कर सकते हैं।
हेलो। Yeah, everybody, participants, please listen. Hello. So, Yes, good yes, afternoon, sir. everyone. So, good Good afternoon. afternoon, all. Good So, afternoon, sir. just yeah, within a few minutes, the session will continue, madam. Just wait for a few minutes. So, I'm going to present the screen. इधर है ना, ये माउस को पकड़ देंगे. कल ये देख लो, कल मैं फिर चला जाता हूँ, कैसे स्क्रीन शेयर करने को देख लो। ये यहाँ देखो, पे एक इसमें क्लिक करो। हाँ, एंटर स्क्रीन मार देना. हाँ, इसको टच, इसको सिलेक्ट सिलेक्ट को टच करो, एंटर एंटर स्क्रीन. ओके. बस हो जाएगा। ओके, अब ये अलाउ करो। अब स्क्रीन शेयर शुरू होना शुरू। ओके, ये देखो तुम्हारा स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया। ओके, Okay, that's. कंटिन्यू। Okay, thank you.
So good afternoon to everyone. This is Rajender. So today, welcome to my session and the forenoon session. Yeah, the session is about the drawing, which are the apps, so applications, mobile and computer applications for drawing and painting activities, so which are very useful nowadays. Yeah, so many people and artists are using this type of softwares. Good Okay, afternoon, sir. yeah, good afternoon, everyone. So as these type of applications we will discuss in this session. So there are so many applications are available. So in that we would like to share some important and new application softwares and mobile applications for the art and craft activities. So those we will discuss in this session. So participants, please let me know, is this screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, mobile applications. So let us explain. I will explain about the mobile applications. There are so many applications are available in nowadays. Yeah, mobile applications or computer PC applications, softwares are available. Okay, the mobile application is the definition of mobile application is a program which is designed to run on smartphones, tablets, computers, and other electronic devices. So these applications are run so only on the mobile phones, tablets, computers, and other applications. These applications are available for this type of devices. Four categories of devices, yeah, are running through these applications. So the mobile application platform. The mobile apps are available through the application distribution of platforms such as Apple Store, Google Play Store, and Windows Phone Stores. So these three these three platforms are there in our software solution, software industries, and the latest the technology. So these three types of apps generally the people we are using these three types of softwares and these stores. From these stores we will apply and download the applications what we required for drawing and painting and whatever it may be, either in other department, in other categories. There are so many different applications are available. So as per our requirement we will download the application from these three types of platforms, that is Google, Play Store and App Store and Windows Phone Stores. And why mobile applications? So because your customers the demand updated version of everything and anything. So the world is getting smarter and things to be the spy, yes, in a click away. So all the things, all whatever universe, in the universe, in our mobile application, within the mobile is in your hand. So all the applications are available in our mobiles. So within a swipe we can see all types of what we required in the mobile applications through the Google platform. So the Google search engine is there. So in Google so many applications are, so many matter, so many important mess, everything is available in the mobile store nowadays.
So that's why they're in a single click away, so we can see everything what is happening all over the world. And the number of smartphone users, so nowadays as per the survey, so there are, yeah, 45 plus millions people are, yeah, using this windows stores, windows softwares, and the 300 plus million people are watching and using the sorry, apple stores, apple phone. And the most of the people, so 800 plus million people are using the smartphones, android smartphone phones. So like so this is, so most of the people in our world, so most of the people are using the android phones only. So 800 plus million people are using android phones. So everybody, so nowadays everybody using smartphone nowadays. And there are three types of mobile apps available. The softwares are available in the free applications are available, and premium applications are and paid applications are also available. The free applications are available on the App Store, free of cost. You can use all the features without paying any amount. So these applications are totally free applications. So in Apple Store and Android mobiles, whatever it may be. So in all these three platforms, we can download our required apps and free of cost for all the application from this three platforms of stores. So like anything, any software we can download with the free of cost from this free apps. And the premium apps are available and provided with the charge of nominal charges, but some premium amount will be charged for the extra features. So some features are available in the free of cost. If you want to pay the premium amount, so they will provide extra features on the same apps. And the paid apps, so paid apps are also, once when we actually pay for the apps, these are totally paid apps. So we have to pay the required amount to this type of applications, which are, yeah, highly featured, highly featured softwares are available. So for them, so we have to pay something to download this type of applications from the App Store and Android stores and Windows stores. So these three types of categories are there: the free apps, premium, and, yeah, paid apps. The important apps for the business. So the benefit for the mobile apps. So for users and for business. So one touch access for users, it is very benefit. These apps are very benefit. Yeah, for one touch access and easy to use. So for business, so it increase your visibility and increase sell through. So because everybody nowadays, everybody is on the Google Blacks are there, and they have the business companies. The companies have their own websites are there. So in their website, they're easily they are advertising their companies' names there. Everything what they are doing for if they are doing for the production, okay, production unit, or there they are selling and marketing. So everything, they will be displayed in this type of websites and Apple stores. So that is easily visible. If we search for that type of companies, that is easily visible to everyone. So the production and the marketing values also improve with this type of searches. People are searching for this type of searches whenever they required, and increase the sell through. So the sales also increased with this type of handy accessible apps for the people, for to increase the benefits and increase the business of the companies. So benefits of the mobile apps. So the for users, for the businessmen. So the benefit is for fast and free. So these apps, mobile apps are so very fast because they are we are using in hand. So always the mobile app is within our hand. So we can use wherever we go, whenever we want. So that can be easily accessible, and it is also free and fast. And the functions offline. So we can also operate the
mobiles in offline also. Some types of applications, so we have to develop some quotations for the companies, developing some important messages to the companies. Okay, sending messages, text messages. We can also do this activity, do this performance with the use of mobile phones in offline also. So that is the main benefit of the mobile phones. And the for business, generate repeated businesses, enhance your social networking. So this improves the social networking with the companies and the customers, and generate the repeated business. So this, yeah, companies regularly they are touching with the people, they regularly advertising, yeah, their main business into the social media platforms. The people will see their products and they see their reviews, the company reviews. They immediately, the people will like the companies, the products, then they will get the purchase the materials from these companies. That's why that generated, the repeated business will be generated in day to day business. So the introductions about the apps, the 32% of the marketing says visitors image are most important from the content of their business. When we create the products of photograph of given in stunning sales. So here you see in websites, so blogs, so they are putting their business images, the photographs. So photographs are placing very important role in the company's business sales, because the stunning photographs will impress the customers. If the photo is good, so that looks and appears, and the people will see the pictures and images or photographs, so immediately they will attract to the photographs. Then the customers, the company will grab the customers by showing their photographs, the with the, yeah, stunning sales. The sales will be increased with the this type of advertising with the photographs. So here one more app is there, Canva app. This app is available for the iPhone, iPads, and Android phones also, and tablets also. So this app allows you to create professional looking designs, so within seconds, and it makes it even easier to send your designs directly to your social media platforms. So all we know this about the platform, the Canva. I will give the some tutorial on this Canva app, how to use this Canva app, how to develop a design, how to create the art and craft activities with this Canva app. So in this next session, I will give you a small tutorial on this app. So how to create an eye-catching designs on Canva. The following 7 tips are very useful to create the eye-catching designs, because so first one is play with filters. So there are so many filters are there. I will show you the filters. So the filters, using of filters, different filter effects are available in this Canva app. And fonts pairing, different type of styling fonts are there, and styling letter writing are there. So styling creative structures are there, abstract forms are there, and creating textures, and also different type of fonts are available, styled fonts are available. Okay, decorative letters also available in this Canva app. So you, with the use of that letters, so we can make can do create so many beautiful designs on the Canva app. And live camera features, there is also one of the important feature and the best feature in the Canva app. We can also direct, yeah, the featuring of the camera. So direct to take the photos, and direct we can, yeah, create a video in the Canva app with the use of laptops or photo cameras, or the mobile phones. And the graphics, so different type of graphics, backgrounds, textures, templates are available in this Canva app. So with the use of different graphic styles, so we can create eye-catching stylish designs for the customers, and for the whenever, so wherever the Canva app is yeah, best app for all type of needs. So even it is business, even it is educational purpose, even it is
college purpose, anything in business, marketing, whatever it may be. So this we can create so many designs as per the requirement. So even nowadays, so the YouTube platform is there, social media platform, Instagram is there, okay, and the Twitter. So all these social media platforms, by using this Canva app, we can create the designs, templates, and the thumbnails for the YouTube, okay, the story reels, okay, all these type of designs we can design on this yeah, Canva app. It's a beautiful app, and there are so many icons are also available. There are so many templates are available, okay, and stock images are also available in there. Some of the stock images are available with the free of cost, and some of the images will be paid, and some premium amount we have to pay for the different type of images are there. So based on the importance of the images, they will ask the amount, premium amount to download particular images. So some of most of the people are using the free images, the free of cost images, stock images, and shapes and illustrations. So these are all for design what we need. So all type of illustrations, templates, drawing and coloring. So what decorations, fonts. So everything is available within this app. And the top 5 apps for photo editing and creating artwork, creating designs. So one is the Snapseed, is one of the great app for photo editing and the decorative creating designs for art and craft. And Adobe Photoshop Express is there. So this is the premium, this is paid app actually. The Adobe Photoshop is a very good and excellent app, the number one app for photo editing tutorials. So this app is actually available for the premium moment. We have to pay for this Adobe Photoshop, and Canva is also there. So Canva also premium as well as the free templates are available in this Canva. The Pixlr is also one of the best app for designing logos for the YouTube, designing logos for the companies, designing logos for the organizations. So we can create so many types of logos. So okay, like in this Pixlr app. And the top 5 video editing apps are also there. The Magisto, one of the best app for Magisto, and Filmora Go. Generally, the YouTubers are using this type of Filmora Go app. InShot app is there. KineMaster. KineMaster is also a beautiful and easy app. Everybody, anyone can operate this KineMaster app. It is also available in mobile store, Play Store also. For Android phones, the KineMaster is also available in free of cost. And for PC applications also, there is a KineMaster app is also available for PCs, mobile phones, Android phones, whatever. So, but in mobile phones, there is a logo. The watermark is visible to all the videos whenever we paid the premium amount, required amount for this app. So the watermark will be erased from this app. So if we want to use the in free of cost, the watermark will be displayed on this every videos. And Power Director. So Power Director also one of the best video editing app, yeah, which the YouTubers, the creators are using this type of yeah, these three actually, KineMaster, Power Director are using so many, using so many YouTubers are using this type of video editing softwares. So how to create a video on KineMaster? So this will discuss later. How to create a design in Canva app. Okay, I will show the video edit, photo editing on the video. Yeah, sorry, editing tutorial on the Canva app.
So this Canva app is a very beautiful design. We can download from the Google search for the PC and laptops, and from Google Play Store we can download the from Google Play Store for Android and Apple phones. So participants, are you able to? Are you following? So here is the premium amount, the 499 amount we have to pay without for the premium. So we can use the free templates also from this app. So Canva is a pro good, more affordable app for this. So here is one of the apps, get Canva free. So whenever we require to get into this app, we have to sign in this website. So I'm signing up with my website, email ID. So we have to sign up with our Google account. So then only we can use this Canva app with the free of cost. So participants, please visible to everyone. Just I want to check it. Yes, anybody can respond, please. Participants, please respond. Anyone? Is it visible? The Canva app is displayed on the screen. Yes, sir. Yeah, so how to create the beautiful design on the Canva app? So we have to create and design a beautiful templates for anything and everything. For everyone, we can create beautiful logos. We can also create the beautiful cards. So here you see the presentations templates also there nowadays. So many companies or institutions are organizing their webinars, online seminars, webinars, and the school programs also. The teachers also presenting their your classroom lessons on the presentations. So by the presentation, so we can create so many templates here. There are so many templates are available in the presentation. So we have to, if you want to present or make a PPT, okay, presentation for okay, so we can create so many pamphlets and presentations here. So if you want to design a card for occasionally birthdays, their wedding anniversary of your friends, okay, any marriages functions are there. So if you want to give a beautiful and digital card to your friends and your relatives, so you can create a beautiful design with this type of templates. So here so many cards, so many designs, so many illustrations are available for this. So we can make use as per our requirement, as per the, we can also insert the pictures of the relatives or friends the who are celebrating the birthdays. We can design so many things with this type of cards
and the Instagram post. So nowadays so many people are in online and social media platforms, so they are using social media Instagram posts. So the post they are designing on this app only. Okay. And the posters, we can also design the posters. As earlier we, yeah, the 75 years Republic Day we celebrated, so for that type of occasions we have to make a design on the poster design competition. Sometimes the competitions are also, yeah, available for the children and children with special needs. So if we give proper training this type of mobile applications for art and craft, so the children will design so many designs, like a poster design and logo design. So they will design the posters as per the requirement of the competition. So they will present the digital photo or digital poster to that particular competition. So everyone is now online. So that's why some companies, the organizations are conducting the art and craft activities, competitions and art. So we can develop the digital posters by using this Canva app. So these type of posters also we can design and develop on this app. And there is also logo designing there, video designing is there. Okay, invitations, we can also invitations, birthday invitations, a wedding anniversary invitations, everything we can create through the readily available templates are there. And here see the photo collage. If we have so many photos, 3 4 5 6 7, so based on the design we have to, so there are some templates are there. So as per the templates we have to select the number of photos and insert the photos in that particular collage template. So then automatically the design will be ready. And your story also. So here I am showing the story flyer also. Some companies are, for example, the insurance companies are advertising their insurance, yeah, policies through these flyers. So they will design the flyer, so they will divine their, yeah, own business strategies through this flyer. They will distribute the flyers of their are their products on the flyers. So these flyers also very important, the business trick for the companies and businessmen. So animated social media also available there, Instagram story we can also design in this and Canva. Okay, postcard also can do, the business card certificate. So some companies, these certificates are readily available certificates. So just we have to, yeah, see, I will show you one certificate. So this is a readily available certificates are there. So select here, the left side is there. So templates are available, elements are there. Okay, uploads, text and more. So here the for you. So for there is, these are all the templates. First of all, just select this one. This is a certificate of achievement. Here the panel called will is there. So this is the model, just a template of the certificate. Just we want to, if you want to change the name, so you want to change, if you want to change your logo, so do you want replace the logo of your company or your institute? Just click on the logo, delete this logo and insert your logo. So just a very simple activity. So some very ready-madely available templates are there. So if you want to change this name, so I want to change this name. So my name is Rajendra. I am writing here, or yeah, see the change, Jendar. So Rajendra. Just I want to change the name. So Rajendra is ready. So if you want to change the color, so just click on the, see the, here there are different fonts also there. So see the fonts. So here Instagram, follow bold, Hagelen, Actual Black. So these are all the different type of fonts. There are some premium fonts are also there. So just select the free fonts, so which are available freely. So just I am taking this Horizon font. So the name will be changed into the Horizon font. So we have to increase the name and decrease the name. So we have to enlarge the name, enlarge the certificate fonts. So we can change anything we can change, on this templates. So I want to change this
the plus is there. Okay, if you want to add page, you want to add more pages, just click on the add page, then you will get the next template. So I want to increase the letter spacing. So here there is the options, you see. uh, this is the font size. Okay, so if you want to increase the font size, then click the plus button. So if you want to decrease the font size, so click on the minus button. Okay, so if you want to change the colors, so here there are so many colors, I want to select the black color, so it's changed. So automatically it is changed. I want to select the purple color, so the color was changed. So I want to one more option is there, I want to decrease the letter spacing. So these letters are near by near, so if you want to change the letter spacing, just click on the letter spacing is available and line spacing is available. We just see the changes. So I am clicking on the letter spacing. So see the letter spacing. So the letters are so very going distance. So that is letter spacing. See. So this I want to do like this. So if you want to a line space, so there are three lines are there. You see the title, main name is there, certificate of achievement is there, and there are some more important messages there. So that we want to change the letter spacing and the line spacing. So here you see the line spacing. So I am clicking on the line spacing. See the difference. See. Okay, this is the line spacing. And if you want to give more effects, so these bullet cells are also available for this effects. So if you want to do more effects on these letters, there are so many effects are available. For example, I want to use this age pink and black. So apply, select the picture and change. So like this we can change more and more beautiful designs, create more and beautiful designs. So if you want to change this, so if you want to change this one, so delete, just to click on the, if you want to delete this matter, so you just click on the matter and delete option, click on the delete insert. So is there. So here also there is a delete option, right corner, right hand corner. So in the here in the right hand corner there is a delete option is there. So if you want to delete that particular line, particular design, particular template, so I want to delete this title. Okay, so this one I want to delete. So select the matter and click on the delete option. Okay, delete element and delete the group. So I want to delete the element. So what I selected. So just like that. So the material, the element was deleted. So if you want to change the color of this particular portion, so select the colors. So crop option is also there for increasing the crop. Okay, so if you want to use this style more and increase this like this, if you want to increase the logo, if you want to decrease the logo, so everything is available in this options. And share button also there. Try to Canva Pro. So Pro is there. Share, if your design is ready, so you can share directly to the Instagram, directly to the Twitter, directly to the Facebook, and even there is an option to download this template. So there is a download option is there. So see the download option. If you want to download and save this option, save this template, you can save. Otherwise you can directly share. So through the share option you can directly share to the social media. See, this is my design, so I want to share share a link is there, or share copy link is there. So direct share your
editing image or editing picture through your link or through your like this. So share to the link user template, share a link to the view. So we can share as a link or share as a template. So I will also explain one more. So nowadays everybody is on YouTube now. So how to create a design, thumbnail design for YouTube. So there are so many options are available for creating the YouTube thumbnail. See, so here there is an option YouTube thumbnail. See the mobile picture, phone wallpaper is there, and the YouTube thumbnail is also there. So I am selecting the YouTube thumbnail. So how to design the YouTube thumbnail? So this is plain template is readily available. So this is plain templates, and these are the pictures. The images are also available. See, if you want to free templates, there is a writing. There are free option is there, and the pro option is there. If you want to download the pre template, so select the pre images. Okay, if you want to pro options, if you want this image, you have to pay something for this image. So otherwise you can download the pre-images related to your designs. So I'm using this template, so it is freely available. See, so how to train your puppy. Okay, this is also there. If you want to create a gym design, gym thumbnail, so you are creating YouTube videos on about the gym yoga exercises. So you have to create the thumbnails for your YouTube videos. So for example, you are designing anything else. So I am selecting this template for the gym. So basics and recipes. So if you want to change this template, so if you want to write your own business, importance of yoga, so we can change that letters, titles. Importance of physical fitness. So this is my title actually. So plate. So Sekada left, press the left key of the mouse and increase the speed. Drag this template, so increase or decrease. So this type of facilities are available in this. So I have to change the font size. So just click on the font size here. There is a font size. Okay, small fonts are there, big fonts are there. So based on this template and your titles, what you are about to tell this video. Fitness. Okay, importance of fitness. So select, you can also erase and rearrange the letters. So see, if you see receipts, tricks are there. So if you want to change this color of the title, so select the option here. There is the so many colors are available. Okay, so select the color. So what you want, so immediately that will be displayed on the title. So if you want to change the time, so 12 minutes hit workout is there. So you want to change this color, so select the colors.
like this. So this color was changed, and you want to insert was templates like gym templates are also there. So if you want to delete this photo, so you want to insert your photo, so then immediately you can download your images and insert your images in this template. For example, just I uh, tap on the photo image and delete the option, so the image was deleted. So next, if you want to insert your images or your gym, whatever you want. So here, just insert your pictures. Take from the gallery. Okay, go to the gallery and the file stores. So you select your images and insert here. So uploads are there. Okay, just elements. I am taking the elements. Here I want to use the elements of the gym. So search button is there. There is a search bar. If you want to use the gym tools, so gym material title. So search, in search you have to search the gym materials. If you want, I want gym materials. So gym templates are also available. Gym images. I am going to search gym images. I want to change this image. So here there are so many gym images are available. So there are some free images are there and premium images are also available. So video type of images are also available for this. So I am select one important and eye-catching designs. So like that, if you design a beautiful thumbnail, so your video will be appears to the customers, appears to the visitors. So easily they will see your video immediately by seeing this thumbnails. So best you have to design eye-catching thumbnails for your YouTube videos and whatever for your purpose. So I'm selecting this type of images. So gym articles are there. Yeah, see. So otherwise you can delete. If you want to delete this option, it is not suitable for this title. So just delete it immediately with the support of the delete option. Then select, go for the next template. So I'm using this. I want to use this image. So select the image, insert the image wherever you want. So like this, you have to insert your image. Yes. So it is ready. So like this, we can change our images, templates, fonts, so different and they directly share to the video. So here, see the recommended and share to the Instagram post is Facebook directly, share to direct Twitter, share to email, Google Play Store, Instagram personal. So everything we can share this design to directly through online. Directly we can share this design, and also there is an option to download your image and send it to your friends, relatives. So based on their requirement. So photos are also available. Okay, these are type all the types of photos for requirement of inserting these designs, and graphics are also there. So this type of graphics, you see, I want to select this graphic. So I want to insert one more image, the graphic image. So like this. So I want to select, I want to replace here. So like this, wherever you want, you can place or decrease the size of this image. Like this, increase or decrease. So this color, the background color also we can change the background color. There are three symbols. What are the colors available in these templates? The colors will be displayed at the slide here. See the blue, pink, and light orange color. So these colors are already available already in the template. So if we want to change this blue color, you just click on the blue color. So this is the actually blue color. This already marked with the circle, marked with the square. So this is already in the template. So we want to change this template, this color into another color. So I want to change that color into gray color. So blue color. So just blue. So the blue color. So see here the blue
color will be, yeah, sir, changed. So pink, I want to change the pink with purple. Select the pink. Here you have to place the cursor on the pink and select color what you want. I'm selecting the color pink, purple, sorry. So see the template, so the color also changed. So and here the both colors are merged, blue and purple color also merged into two colors. It looks so like a eye-catching design. So that's like that. So you people will develop new designs with the use of Canva. And there are so text is also available. I will show the text, how to insert the text. Readily available templates are there. So huge sale. Okay, these are the different fonts and text styles of text. So glow text are also available. Enjoy, dream. So different style of text are available. The readily available text are there. Just we want to change the names. So see, I'm inserting this. So I want to delete this type of font. So I will delete this font and insert one more font. I like this. If you want to like any font, so you can insert this type of fonts. So I'm using this. Just wait. So proposal is there. So we want to change this type of text here. So if you don't want this style, so you just click on the text. So what you want to erase, click on the double click and delete. So delete the, so that matter will be deleted. So here also one more topic is there, one more one, that also I want to delete. So just delete the element. So that was deleted. I want to change this, yeah, text. So I want so gym is there. Okay, figure fit gym. So I want to write the figure fit gym. So figure fit gym is my gym name. So I want to do this figure fit gym in a single line. If you want to change in two lines, you can increase the line into the single line. So or you want to do with two lines, decrease the template. So and then, so it is in the some part is in the picture, on the picture. So we want to decrease the font size. So select the font and select the effect. The spacing is the space bar. So select the space bar. Letter spacing are there, line spacing are there. So we want to change the letter spacing. So it's change like less letters like this. So letter spacing is done. So we want to place at the exact place where we want. So choose your options. Okay, where we want to place the, either you want to place here, either you want to place here. So where is the place? So very suitable the where we want to place the title of your template. So place there and select. Just click on this. So that will be, yeah, ready. And you want to change the colors. Okay, there are so many options are there. If you want to change the same, if we go back, so there is an option, resize option is there. So there is a go back. If you want to, yeah, go back, so just click in this, the circle is the curve is there, no? The curve. Just click on this. Okay, forward and backward. There are two options are there on the blue line bar. So home bar is there, no? Home bar, so task bar. So there are two options are there. Forward and backward is there. So the undo option is there and redo option is there. So if you want to undo, select undo option. So redo and do the options. So like that we can change so many designs. So I want to change jolly is there. Different fonts are there. So read undo. So I want to, yeah, this is not suitable with this template, so I want to undo this. So delete this, just undo. So do no need to delete the options. So just
resize option is there, file option is there, home option is there. So there are so many options are available. So one more I want to, the elements are there. Okay. So participants, please tell me, is it okay? Are you understand? Are able to understand this presentation? Hello. Yes, sir. Yeah, are you able to understand this presentation, madam? If you have any doubts, please ask me how to change the designs, how to change the logos, how to Okay. yeah, create a design is there. So you have to create a design, new design. I will tell you the presentation design, card is there, Instagram, posters, video. Okay. So like this, you can change. A collage is there. I will tell you the photo collage work. So here empty place is there. So here we are selected one empty template. So we want to change this template into different as per our requirement. If your child birthday is there, so you want to present your presentation. So if you want to present a photo album to your child or wherever your relatives, so select three more colors based on the templates. So here I will show the this template. So here how many photos are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 photos are there. So this photo I want to change with my photos. So just click on the photo. So you see it is selected. It is selected. This is also selected. So just click on the photo and insert your photos. So just write the titles. I want to change this colors. It is not visible on. So just I want to select the colors. Okay, whatever you want. So write the text. Select your designs. So as per your requirement or function, whatever it may. So just insert the pictures and create your own design. You are beautiful, and the customized designs are available. The customized templates are available. So if you want to do a business cards, if you want to do business on this Canva, so you can. If you are a beautiful artist, if you are a graphic designer, so you can create more designs. People are creating more designs and send your digital ID cards, digital visiting cards to the companies. You can also sell your own designs to the customers. So we can do more. We even also business, it is also used for the business purpose also. If we give proper training for adult persons with intellectual disability and creating this type of art activity. So for example, so they are designing the digital art. Nowadays there are a lot of demand in the digital art. So many people, companies are selling their products in the digital arts. So if we do the digital arts with this type of platform medium, so we can sell our own products, the customized products. If you print on this, so just inserting and yeah, design, changing the design, just to print out the design and yeah, give a nice frame to that particular album and sell your products to the customers. So as per the requirement of the customers and employers. So this is also a very beautiful app for designing ourselves, and as well as it is also useful for the business purpose also. So see here, marketing purpose, office purpose are there, prime production are there. Okay, office purpose. See the office purpose, what they marketing. So marketing the logos, design a logo to the companies. Okay, design a flyer to the companies. It's a black banner. So every company nowadays, everybody using the blacks. So create a black banner for the blacks. Create a label and create a gift certificate. Create a email header and create a circle stickers. So these are all the business cards, marketing, what the employers are asking for their customized employers. So tickets, okay, banners,
coupons also. Some, if anybody is organizing the functions or parties, so they are distributing some coupons. We want to design a beautiful coupon for the company, so then design the coupons and print it and give it to the company. So you will get the required amount, or $10, $100, whatever they will give you. So for this type of business we can do for the marketing purpose and business purpose. So see, there are so many designs are there: yard, sign, okay, feedback, YouTube video, ads, email, newsletters, and there are office purpose also. We can use the resume, preparation of resumes. So there are so many resumes. I will show you one type of resume, how to change the resumes. So there are readily available templates are there. See, so I want to this design is I like this design. Just I want you have to change this design. So if you want to increase the template size, just so undo, just undo. So here we want to change the matter only. The design is ready. So you want to change the photos. I want to insert my photo here. Change your photos. Okay, change your name. So here the name is there. My name is Rajendra. I want to change my name. So just select the name and just write your name. So like that. So it is changed. So the matter also, the qualifications, what your essential qualification, what is your experience, and the technical qualifications, essential qualifications, the percentage score of your achievements, okay, your experiences and your innovations. So whatever it may be, what you want to add in your resume, you can add everything with the use of this readily available templates. No need to type, and no need to combine, and no need to insert your images. So no need to DTP work. Okay, there is no requirement of DTP work. Just we want to change the titles, the matter what we required. So that's all. That is the main important of these templates and the benefit of this use of Canva. So if we want to change the colors, we can change the colors. So if, for example, I clicked on the black color, just you see. So I just tap on the black color. The black is really visible here on the this main taskbar. Okay. So see the black. So I want to change this black into another color. So just click on the black what we selected and select the colors. Okay, orange color. I want to take the orange color. This the color was changed, and I want to change this title bars also. Title of this. Just click on the color, change the colors. Yeah, fonts also we can change the fonts also. Okay, everything is we can change and resize your photos, change your photos in setting. Okay, everything, fonts, increasing font size, decreasing font size. So all we can do with the use of this a beautiful Canva app. Some characters are also there. So like this, shapes are available, different characters are available, and logos are also available. See the videos, audios, styles are available for this texture background styles. Okay, customized texture backgrounds and styles of fonts. And you see the different type of emojis are also available for your design. So these are the different type of emojis, pictures, so you want anything, if you want anything, you can insert this picture, select the picture and insert into your design. That's all, very simple activity. So even our children with intellectual, we are also giving training for persons with intellectual disability and the computer related activities, the computer. So the nowadays generally we use it to do the activities on the Photoshop or the Google Windows Paint. So all we know the Windows Paint. So there are instructionally and the basic skills will be taught in the Windows Paint file.
and then gradually increased the skills of abilities of children with intellectual disability on this type of platform, the softwares. So we are introducing the calendar making software, already introduced the ID card making software for PWDs. They are doing very good. They are learning and training in that particular software apps in our DL department. So they are doing well and learning well. Some of the trainees, two of the trainees, our dial trainees are got a job in the Microsoft office at Hyderabad branch. So like that, we are giving and improving their skills and artistic skills and graphic skills, the presenting skills. So all this we are observing and giving proper training from fundamentals to getting some wages for their day-to-day life. So that type of software apps we are introducing for adult persons with intellectual disability in our department. So we are also proposing and promoting this type of apps for suitable for the persons with intellectual disabilities. Okay, participants, yeah, this session is completed now. So if you have any doubts in this presentation, in this session, so to feel free to ask the questions. And otherwise, you have to write the chat box, right? If you want to write in a chat box, you write in the chat box. Otherwise, you can ask. Feel free to ask the questions. So Diksha Pati said, "Thank you, sir. Thank you for your nice feedback." Thank you, sir. Thank you, Amar Vagde, Jay Gopal, Vineet Ishwa. Thank you, sir. Thank you for your nice feedback. So I hope you understand. I hope you learned something about the graphic and the beautiful Canva app to present your requirements to your day-to-day lives. So I'm closing the sessions. Thank you so much for all. Thank you for attending this sessions patiently. Thank you one and all. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, I'm handing over this session to our program coordinator for this CRE coordinator. Okay, sir. Please, participants, please wait a few minutes. So Madam will be uh, share the whatever next session is there. She will tell you.